All right, so welcome all in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. So in this webinar, those who are joining us for the first time, I'll just brief the flow. So first we start with the market snapshot for the week, means how the benchmark, sectoral indices, Nifty 50 stocks performed during the week, followed by our view for the next week for Nifty and banking index. And then we conclude the session with few stock ideas which can be on your radar, and lastly a feedback poll and then Q&A. तो आप सभी का स्वागत है जो कि पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इस वेबिनार में। और इस वेबिनार का बेसिकली पर्पस यही है कि नेक्स्ट वीक के लिए कैसे प्रिपेयर करें और कौन से सेक्टर्स कहाँ पे फोकस होना चाहिए, कौन से की लेवल्स हैं इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए, बैंकिंग इंडेक्स के लिए, ये सब चीजें हम बातें करेंगे नेक्स्ट 20 मिनट में। उसके बाद कोई भी सवाल है आपका प्रेजेंट रिलेटेड टू दी प्रेजेंटेशन, कोई सेक्टर जिसमें हमने बात नहीं की हो और आप जानना चाहते हो, डेफिनेटली वी कैन टेक दैट. Stock specific queries we generally avoid, but if you are associated with us with Religare, definitely you can reach out through branches or business partners, and we can definitely help you with your stock specific queries as well. So now let's start with the disclaimer first. The presentation that we are going to share or discuss is for informational purpose, is for educational purpose. It's not a trading or an investment recommendation. So before making any decision based on the information shared, please check with your financial advisor. तो जो भी हम बात करने वाले हैं ये largely informational है, इसमें कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो भी आप डिसाइड करें ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, वो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा। Now coming to the market overview for the week. So as you can see on the screen, this is the performance of the market during the week, both sectoral indices, benchmark indices. So as you can, we'll start with the benchmark first, that both Nifty and Sensex could manage to end in green for the fourth week. It a very volatile week, means largely we were range bound, but today's session was almost like a roller coaster ride for the participants. So, after breaking the critical supports, we finally reached closer to the week high as well. So it's definitely a tough week, especially today's session for the traders, but eventually we ended on a positive note. On the sectoral front, as you can see that among the top, sectoral indices, which we have kept on mentioning, both are on the list. Banking marginally positive, but IT leading from the front, roughly around 3% gains. Then we have realty, financials, metal ending on the positive side. But on the other hand, media, energy, FMCG, pharma, auto, they've all ended in red. Coming to the top 5 gainers, Bharti Airtel, Bajaj Finance, Wipro, Infosys, Bajaj Finserv. So Bajaj Twins and 2 ID names, plus Bharti Airtel after the phenomenal move in today's session. On the losing side, again a very diverse list, but FMCG counter in particular led the decline. Tata Consumers and HUL. Then NTPC, Tata Motors, and Reliance. So this was the list of top 5 losers during the week, for the Nifty 50 basket. तो देखिए ये इस वीक का एक क्या परफॉर्मेंस रहा पूरे हफ्ते का, वो एक ग्लांस में अगर किसी को देखना है किसी को एक बार में, तो ये एक समरी है उसका। दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और सेंसेक्स बहुत रेंज में थे, बट आज का सेशन, फ्राइडे का सेशन बहुत वॉलेटाइल था, बट एंड अच्छा हुआ और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दोनों इंडाइसेस ग्रीन पे बंद हो पाए, करीब करीब आधे % की तेजी के साथ। सेक्टोरल फ्रंट की पोजीशनिंग आपके सामने है। आईटी, बैंकिंग, ये काफी टाइम से हम बोलते आ रहे हैं सेम चीज कि जहां स्ट्रेंथ है वहां स्ट्रेंथ है, तो वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि मार्केट में बीच में कुछ भी हो जाए, बट इवेंचुअली ये दोनों ही सेक्टर हैं जो कि मार्केट को डिराइव कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। बाकी सब इन बिटवीन थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, कभी पॉजिटिव साइड पे, कभी नेगेटिव साइड पे, बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी हुई है बैंकिंग और आईटी में, जो कि मार्केट को होल्ड कर पा रहा है या हेल्प कर पा रहा है रिकवरी में।
अब आते हैं गेनर्स लूजर्स पे। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं जैसे कि आईटी मेजर्स ऑब्वियसली इंडेक्स के अगर सेक्टोरल गेनर रहे तो यहाँ पे आपके निफ्टी में भी दो नाम आपको आईटी मेजर से नजर आएंगे, बजाज ट्विंस, भारतीय एयरटेल, ये सब यू नो भारतीय एयरटेल स्पेसिफिकली आज के मूव, और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में भी एक मेजर सपोर्ट रीडेस्ट के बाद एक रिकवरी। लूजिंग साइड पे बड़े नाम फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस जहां पे नेगेटिविटी देखी, और साथ ही साथ एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, रिलायंस, जहां पे कि काफी टाइम से एनीवेज प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू चल रही है। सो दिस इज द snapshot now. Let's talk about how to approach the market next week. So this is the daily graph. We were here last week and we've discussed this level 24,800, right? So 24,800, we said that it's a make or break area. In case if we manage to surpass, then 25,200. If we fail to hold, then the sideways tone might continue, with 24,300 being the critical support area. What happened today is that for the intraday, we slipped below this yellow line around 24,300, 350. But eventually on the closing basis, we've ended around the week's high as well, day high and week high as well. So this strong close indicates potential of further recovery. Yes, we are again at the critical juncture of 24,800. So are we trying to preempt the move? See, the close indicates that this recovery is here to stay, right? Because the way we've rebounded and the way we've closed both indicates that Nifty is likely to attempt a breakout above 24,800 in the coming session. So in that case, 25,200, this area close slightly above this mark, and then 25,500. So देखिए पूरे वीक तो हम ये रहे बहुत टाइट रेंज में। डेली ग्राफ है जो आपको पता भी होगा, जो ट्रेड करते हैं एक्टिवली उनके लिए इट्स नथिंग न्यू। बट आज का सेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि जो सपोर्ट की बात की थी हमने लास्ट टाइम, 24,300 को होल्ड करना चाहिए इस पूरी उसमें, इंट्राडे में उसने उसको ब्रेक किया, और ऐसा वैसा ब्रेक नहीं किया, डिसाइसिवली उसके नीचे ट्रेड भी हुआ काफी टाइम तक। बट जो रिकवरी आई वो बहुत स्ट्रांग आई कि जब आपने क्लोज किया तो आपने डे हाई और वीक हाई के पास क्लोज किया। तो इस तरीके के मूव्स के बाद यूजुअली थोड़ा भी जो वीक हैंड है जहां पे कि सपोर्ट टूट गया, अब चलो निकल जाते हैं, या फिर स्टॉप लॉसेस लग गए, तो वो सभी पोजीशन एग्जिट होने के बाद इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मार्केट में रिकवरी आई है। तो ये एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि 24,800 को आप ब्रेक करें और 25,200 की तरफ आप नेक्स्ट वीक में जाएं। 25,200 के पास ऑब्वियसली रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ 25,200 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद फिर 25,500 तक के भी लेवल्स होंगे। क्लोजिंग बेसिस पे 24,300 विल कंटिन्यू टू एक्ट एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सो इसका सिग्निफिकेंस कहीं पे भी कम नहीं हो रहा है, बिकॉज इंट्राडे में पेनिट्रेट हो गया, ठीक है, बट क्लोजिंग बेसिस पे 24,300 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी टोन पॉजिटिव की कि मार्केट में चलती रहे, राइट। 24,300 गया तो ऑब्वियसली 24,000 के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा हमको, शायद या उससे भी नीचे। बट एज ऑफ नाउ तेजी के इंडिकेशंस बहुत क्लियर है, द वे वी हैव क्लोज्ड द मार्केट टुडे। बैंकिंग, we are anyways witnessing outperformance, and we've said this last week also that in banking we are not worried much about any particular level, because we are anyways very closer to the record highs. But during this consolidation, it's a flag, basically a technical pattern which forms after a strong directional move either side. Here also we saw a sharp decline today. Obviously that was the reason why Nifty slipped below 24,300. Below this critical mark, which we've discussed last time, 25,500, 52,500, 600 zone,
which should act as a support. So we penetrated that mark decisively for brief, but eventually again here also we've ended almost around the week's high. So here our view remains the same, that banking is still comparatively stronger alongside with IT, and 54,500 the record high, and then 55,500 something that market can attempt, right? So देखिए, बैंकिंग में कोई डाउट पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है. जिस तरीके से हम यहाँ पे थे वीक के स्टार्टिंग में, और उसके बाद बहुत टाइट रेंज में हम कंसोलिडेट कर रहे थे, गिर रहे थे. यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं था. इनफैक्ट निफ्टी थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हुआ था. यहाँ जिस तरीके से आज एक डिक्लाइन के बाद रिकवरी आई, मींस जो आपने रेंज में भी री एंटर की है, आपने बड़ी ईएमए को भी ब्रेक किया, ये सब होने के बाद जिस तरीके से रिकवरी आई, यहाँ पे भी यही एंटिसिपेशन है कि आउट परफॉर्मेंस, ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा. 54,500 55,500 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में आपको दिख सकते हैं. सो फॉर banking index also the view is positive. This line will, on the closing basis again, like 52,600, will continue to act as a support area. See why we are seeing closing basis, because intraday we all know that kind of swing that markets are witnessing these days, especially on the expiry days. So to change our view on the index on the intraday basis is not the right strategy. The good way to tackle this is by keeping your position size in check. राइट. सो देखिए, जिस तरीके की वोलेटिलिटी अभी दिख रही है हमको कुछ दिनों से, खासतौर से एक्सपायरी वाले डे पे और अदरवाइज भी, तो पोजीशन साइज बेसिकली क्या होता है कि हम नॉर्मली 10-20 लॉट्स में ट्रेड करते हैं अगर इंडेक्स की हम बात करें तो जब आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है तो उस पे आपको देखना चाहिए कि अगर मुझे वो साइज सेम रखना है तो मेरे स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, अदरवाइज मैं हेज पोजीशन में प्लान करूं क्या. तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जब हम क्लोजिंग बेसिस पे हम बात कर रहे होते हैं. मार्केट का रिवर्सल के लिए हमको एक पर्टिकुलर लेवल का वेट करना है. बट एनीवेज, the good part is that for both Nifty and banking index we had a firm close, and we anticipate this recovery to extend. Now coming to the stock specific opportunities that we see in the market. BEL we have discussed a couple of weeks ago also. Still same reason why we find this stock interesting, because a tight range consolidation followed by a breakout, then we are seeing a gradual recovery. At least it's not volatile as what we are seeing in the market in general. So this is very important, because a whipsaw or volatile swings usually make you exit the position even if you are sitting on the right side. But at least in BEL as of now we are not seeing any kind of such moves. This is positive. Trend is positive. Stock is closer to the record highs. So we expect the stock to build on this move in the coming weeks. देखिए, इस तरीके में मार्केट में जहाँ पे की वोलेटिलिटी दिख रही है, हम रिकवरी का एक प्ले कर रहे हैं. अभी तक मार्केट में जो होता है ना ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक तरफा तेजी वाला सिनेरियो नहीं है अभी. तो यहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन पे और फोकस करना पड़ता है. यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे फेवरेबल है, कम वोलेटिलिटी कहाँ पे है, क्योंकि इंडेक्स में तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है. तो ये सब को देखते हुए BEL एक ऐसे कैंडिडेट जहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकआउट आया था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बीच बीच में पॉज भी हो रहा है, बट कोई ऐसा वॉलेटाइल स्विंग नहीं देखने को मिल रहा. तो इस तरीके के स्टॉक्स में यूजुअली एक्यूमुलेशन का इंडिकेशन या फिर एक जस्ट नॉर्मल पॉज जो बिफोर एक अच्छे मूव के लिए, उस तरीके के इंडिकेशंस यहाँ पे आपको BEL में दिख रहे हैं. राइट. Next आते हैं when it comes to IT. So see, as a sector, we still feel that IT and banking, the others are just
participating on the rotational basis very selectively. But here, the two key sectors which hold maximum weight, they are the one basically which is pushing the markets higher. So last week we discussed about Infosys. This week LTIM. This is earlier the Mindtree. So see, IT majors, they are also volatile. Earlier they were less volatile, but now we are seeing a similar kind of volatility. But in the mid cap basket also we are seeing certain stocks performing well, and LTIM is also among those names. As you can see that post breakout from this broader consolidation range, it slipped again inside that pattern, but eventually now we have surpassed the previous swing high decisively, so and with volumes. So this shows a potential retest of the record high soon and maybe higher. देखिए, अगर सेक्टर्स की बात करें ना कि कहाँ पे फोकस करें, सबसे जो कि ऑलमोस्ट पता नहीं कितने वीक्स हो चुके हैं, ये हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, आईटी और बैंकिंग. इसके अलावा कहीं पे और कंफर्ट आ ही नहीं रहा है अभी तक. मीन्स बीच बीच में पार्टिसिपेशन आपको मेटल्स में भी दिखेगा, रियल्टी में भी दिखेगा, और ऑटो में भी कुछ एक सिलेक्टिव काउंटर्स. एफएमसीजी है जहाँ पे बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है, आज थोड़ा बहुत ठीक था. बट आईटी और बैंकिंग ऐसे हैं कि जहाँ पे की वॉलिटिलिटी के बावजूद भी एटलीस्ट यू हैव द कंफर्ट की आउट परफॉर्मेंस जो चल रही है, जो कि इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई के पास है ऑलरेडी, आईटी रिकॉर्ड हाई पे है, बैंकिंग रिकॉर्ड हाई के पास है. ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, इस तरीके के इंडिकेशंस हैं. तो लास्ट वीक हमने आईटी में से बात की थी इन्फोसिस की, जो 4% 4.5% के गेंस के साथ बंद हुआ. अब एलटीआईएम में भी सिमिलर काइंड ऑफ मूव एंटिसिपेटेड है, अपने नए रिकॉर्ड हाई बनाने के लिए तैयार दिख रहा है स्टॉक. प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर चुका है विद वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, सो ये भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं. लास्टली, व्हाट इफ वी सी सम करेक्शन कंसोलिडेशन अगेन, so we should have at least few names wherein we can look to go short also. So among the weak counters within the F&O basket, Cipla, Coal India, NTPC, Oil, ONGC, these are some of the names wherein we are still seeing underperformance. As you can see, it's a Oil India chart, and the stock has been gradually drifting lower. We have slipped below the long-term averages, this red line that as you can see on the screen. Plus there was a range in which we were trading, is the consolidation range breakdown also, and despite the recovery that we saw in the market, it failed to participate. So that clearly indicates negativity. This indicates more pressure in days to come. So if at least if you are not shorting this stock, considering the market tone is positive, one should not go long in underperformers. Until we see any sign of reversal or recovery, one should refrain from underperformers, especially in current market, because we are playing recovery. It's not a broad-based rally. At the same time, yes, the small cap index was among the top performer. Means we made a new high, but in the last two trading session, it was also witnessing very volatile swings. Eventually, we ended on a flat note. Here also we would recommend that one should be cautious, especially if you are holding small caps and mid caps. So be strict with your stop losses in case if the volatility continues. देखिए, मार्केट में जैसे कि हमने बताया, तेजी के लिए तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट यहाँ पे वीकनेस भी है, ऐसा नहीं है कि वीकनेस नहीं है. तो कुछ एक नाम जैसे सिप्ला हो गया, कोल इंडिया हो गया, ऑयल, एनटीपीसी, इन सभी में अभी भी वीकनेस का टोन है. तो इनको अवॉइड करना है, लॉन्ग नहीं करना है, और कोशिश करना है कि अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देखें. राइट, स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट वहां पे अगर जस्ट इन केस मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है तो वहां पे ज्यादा हो सकती है, या शायद कुछ टाइम के लिए वो अंडर परफॉर्म करें, बिकॉज आउट परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम के लिए हो गई है, थोड़ा स्ट्रेस्ड लग रहे हैं ब्रॉडर इंडाइसेस. तो फोकस लार्जर मिड कैप और इंडेक्स मेजर्स पे रहेगा. Right, so this is all from the presentation part.
Right. So now we'll do just a quick feedback poll so that uh, to understand that whether you like the session or not, and then we can start with the Q&A. तो प्लीज अपना फीडबैक इसमें फिल कर दीजिए और उसके बाद कोई भी सवाल है आपका, Q&A का बटन है आपकी स्क्रीन पे, उसको यूज करते हुए यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. Please quickly fill this feedback so that we can start with the Q&A. And those who are done with this, they can start posting their questions. Oh, okay. So there was some issue with the screen view. Okay, so I was not aware, Mrityunjay. So I hope by the mid of the presentation it would be clear. Okay, so we are almost done with the feedback. So now let's start with Q&A. So first question again, stock specific queries. We'll try and address this later. First, pharma sector long-term view. There's a query from Riha. So long-term, pharma sector definitely we are seeing strong trend. There is no doubt about it. But of late now, we have started seeing a bit of a cool off in certain pockets due to some regulatory related issues, US FDA related, or other challenges as well. But it's just a temporary phase. The long-term outlook for the pharma sector still looks upbeat. Just to give you a reference, that the pharma index is currently quoting at 22,160. Right. In the last rally, from the lows of March 2020 to 23, from the levels of around 11,500 to 23,900 is something that the pharma index, traveled. So now from the last 4 or 5 months, we are seeing this profit taking tone. So for a near term means 1 to 2 months, this tone might extend further. It's largely the time correction that we are seeing in most of the names, except few exceptions. So broadly, yes, you can consider accumulating stocks which are outperforming the sectors. Means still we have certain names which are not seeing decline. In fact, they are inching higher while the index is witnessing correction. So one should be focusing on that. Okay. FMCG sector, Shehans has this query. So yes, see, there's no sign of bottoming out, both in terms of the fundamentals and the technical indicators. But usually, when we see the bottoming out, it is usually before the news comes, public. What is the good part or bad part? So of late, you might have heard about Godrej Consumer sharing their commentary in the quarterly update. So that's the bad part, and that's the reason why we saw that the other FMCG majors also witnessed a decline. The good part is that we have already seen, a steady decline across the FMCG pack. So when it comes to, let's say, FMCG as a sector, yeah, so we were at the highs around 66,400, and now we are at 56,900, right? So roughly around 11,000 point kind of a decline. So roughly around 20% from the record highs that the index has corrected. So indications now are in the favor that we have largely discounted the negatives. मतलब जितने भी नेगेटिव्स थे और जितने भी नेगेटिव्स आ रहे हैं वो लार्जली अब डिस्काउंट हो चुके हैं एफएमसीजी सेक्टर को लेकर.
बट इसका मतलब ये नहीं है कि we should jump into a trade and go long into all the FMCG names. They might not correct further, but outperformance means, if the Nifty inches by 0.5%, they might just go up by 0.5% or quarter to a percent in a sustained basis. One day it may definitely outperform, because today was the day when FMCG was among the top winner on the sectoral front. But largely, the outperformance is something that we have to wait. So if you are an investor and if you are looking to accumulate, yes, you can start accumulating select pharma, FMCG names as well. Okay, so pharma sectors we have already discussed. There's another query on pharma. So energy, right? So Swapnil has question on energy space. So energy also, Swapnil, like, we have multiple basket within the energy space. So at one end, the OMCs, they were seeing some recovery, but with decline in the index, it also faded out a bit. But still, like, the picture is okay uh, on the OMC front, but the quantum is less in comparison to the other sectors. So yeah, energy is still like, we have multiple hurdles to cross, and like what we've shared about the OMC basket. If we see, yeah, so even oil, gas distribution names, yes, they have done pretty well. In fact, it's a decent recovery, I would say, for MGL, IGL, and Gujarat Gas. But still, I would say that the way we are seeing the overall sector performing will have a relatively, uh, you know, lower chances of outperformance from the energy basket as well. So, just to add to this means, some of these names from the gas distribution or power distribution side, selectively we are seeing some outperformance, but largely the sector is still, so it's similar to what we are seeing in FMCG. Though FMCG is still weak, here we are seeing at least comparatively better positioning. So let's say if I keep FMCG at last place, so energy basket is on the second last, on my list of preference, right? So for a time being now, one should be, if the view is short term, definitely one should be very selective in energy space. Okay, Mr. Ajay Gupta, thank you for the feedback. And sir, can FMCG and auto see a reversal from here? Britannia announced price hike, Tata Motor announced same, and IT has seen a very good move. Shall not be cautious at same time, because slightly profit taking, it should be the IT first. So actually, you know what, the general tendency that we have is what you rightly mentioned, Mr. Gupta, that whenever we see profits, we first think about booking profit. Loss ke case mein, it is okay, we can continue to run it for ages. And that's the reason why also market behaves differently. So stocks which are expensive, as per your thought process, that ये तो बहुत बड़ा है, 10,000 का स्टॉक है, 8,000 का स्टॉक है, प्राइस के हिसाब से तो इसको टच नहीं करना है, तो बहुत एक्सपेंसिव है, एंड इट एंड अप गोइंग टू 50,000, 60,000 एंड व्हाटएवर. And we are seeing multiple examples these days, and it's across the board. 5-10 minutes if you'll spare, you can see on your own also what I'm referring to. At the same time, when we see stocks which are underperforming, we believe that they are cheap or they are good bargains, but they end up
becoming more cheaper and cheaper with every passing week. Also, the relative underperformance is something that also we fail to understand. So my point is, sectors which are not showing sign of recovery reversal, uh, when the market is making an attempt of recovery, one should avoid them. See, for the trader, the most important thing is to align your position according to the market. If market is saying that Infosys, TCS, HCL Tech, they are the one basically wherein we are seeing buying interest because they are trading at the record highs and they are moving higher with every passing day, then we should not uh, jump into the conclusion that what if the market scenario reverses, they might also witness sharp recovery. It may happen. I'm not denying that in case if the market corrects further, then IT is not going to feel the pinch. But the recovery, every time we are seeing a decline in IT and banking, they are recovering almost equally sharp. Why? Because there's a buying interest. That's the reason why they are at the record highs or closer to the record highs. So for a time being now, I feel that one should avoid. That's the reason why I've been kept on saying on this webinar that कि IT और बैंकिंग के अलावा कहीं पे कंफर्ट है ही नहीं, और मैं आज भी यही बोल रहा हूँ. दूसरी जगह पे आपको थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिलता है, बट फेड आउट हो जाता है. जब होगा तब होगा, डेफिनेटली विल डिस्कस. जैसे रियलिटी एज अ पैक है, वहां पे है. अगर मैं थर्ड रैंक पे किसी को रखूंगा तो रियलिटी इंडेक्स को रखूंगा, जहां पे DLF, ओबरॉय रियलिटी, दे हैव डन प्रीटी वेल, राइट. बाकी सब नामों में अभी कहीं पे भी कंफर्ट उस तरीके का नहीं है. तो होप इट आंसर्स योर क्वेरी. ओके, what next? So, okay, now certain stock specific queries, but we'll answer it differently because see, when we talk about a sector which is doing exceptionally well, let's say IT, here we are talking about IT being the top performer alongside with banking. But within the IT also, we have to think that what stock in the sector basically which are outperforming the sector. That is our further refined list. And then comes big names like, Infosys, HCL Tech, TCS, from the mid-cap basket, Tech Mahindra, LTIM, Coforge. If the stock is not aligned to the sectoral or the pair moves, they might see some recovery, but this underperformance might continue. So stock like Birla Soft, which is still struggling to cross a critical barrier at 630. So this clearly shows that the interest is in these names, not this, right? So anticipating that if the sector is doing, the underperformer would come one fine day and join the list. That I've not seen such examples, at least in the past, right? So hope it answers your query. Okay. So largely we have answered, I guess. Yes. So a couple of more queries on. So again, like I'll just make it very clear that IT, banking, view positive. Others say selective, mid cap, small cap. Again, extra caution because after the weeks of outperformance, even if the market may go higher, they might trade subdued or not participate in a similar quantum. So this is all for today. So thank you everyone for joining in. आप सभी का धन्यवाद. और next week, same time, same place, means on 20th, we'll connect again. So thank you. We can end the session.